हेलो एवरीवन पिला माने आज ही क्लास रे तुमरो जो इंग्लिश रो नॉन डिटेल रो जो प्रथम पाठ अछि जाना हो जो द ट्रंक ऑफ गणेश बा गणेशंकर सुंड। तो पिला माने एही पाठटू हम ऑलरेडी डिस्कस कर देइछे। तो एही वीडियो रे हमें यार जो पार्ट 1 पार्ट 2 जो पार्ट 3 थिला तारा क्वेश्चन आंसर ता से तुमरो जो एक्सरसाइज बा तुमरो जो अनुशीलन अछि तारा क्वेश्चन आंसर को हमें गोटे वीडियो रे डिस्कस करबा। Number 1. Soon after his birth, what did Govinda Maharana do? So गादी सरला परे गोविंद महाराणा कौन करथिले? So soon after his birth, Govinda Maharana took a glass of tea from his wife's hand. से गादी सरला परे तांको स्त्री को हातरू कपे चा नेथिले. Why was he anxious in the morning? से सकाळू व्यग्र कोन पई थिले? His fingers suddenly slackened and the glass slipped from his hand when he took a glass of tea from his wife's hand. It was then he became anxious and had his first conscious knowledge of the fear he carried. So जेतेबेले से गाधी आसला परे चाटे पिया पई तांको स्त्री को हातरू ग्लास टी नेथिले से ग्लास टी तांको हातरू स्लिप करी गला खसरी की तळे पड़ी गला तो ताको से अशुभ बोली मानिथिले. So it was then he became anxious. आ एई घटनाटी घटिबा परे से व्यग्र होई जायतिले आ तांको मनरे थिबा डरटी सेदना उज्जीवित होइथिला. What was Govinda Maharana's trait? So गोविंद महाराणा को वृत्ति कौन थिला? गोविंद महाराणा trait was idol making. मूर्ति तैयारी थिला तांकर वृत्ति. What was bothering him since last 3 days? गत 3 दिन हलाणी तांको कोन चिंतित करथिला? Since last 3 days he had been faced unhappy incidents. So किछि अप्रीतिकर घटना तांको संगे घटुथिला. He thought of the strange thing that happened to the trunk of Ganesh idol which he had met. ଆଉ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଣ ଘଟଣାଟି ଘଟୁଥିଲା? ସେ ତିଆରି କରିଥିବା ଗଣେଶଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିର ଶୁଣ୍ଢଟି ବାରମ୍ବାର ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଥିଲା. Worried Govinda Maharana gave reasons for the breaking of the trunk. What were they? So ଗୋବିନ୍ଦ ମହାରଣା ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ କାହିଁକି ନା ବାରମ୍ବାର ଗଣେଶଙ୍କ ଶୁଣ୍ଢଟି ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଥିଲା. So ସେ ଭାଙ୍ଗିବାର ରିଜନ କଣ ସେ ଦେଇଥିଲେ? ଗୋବିନ୍ଦ ମହାରଣା was worried and had many thoughts in his mind. ଗୋବିନ୍ଦ ମହାରଣା ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ରେ ବହୁତ ଚିନ୍ତା ସବୁ ଆସୁଥିଲା, ବିଭିନ୍ନ ଚିନ୍ତାଧାରା ସବୁ ଆସୁଥିଲା. He thought से भाबिले that he had been misusing his power carelessly. So तांको पाखरे जो कला गोटे अछि तांको पाखरे जो पावर अछि आइडल मेकिंग करिवार से बधुए ताको बहुत केयरलेसली यूज करूचंती, असावधान भाबरे यूज करूचंती. सेही पई होय तो तांकर ए सब अघटना घटुची. He also thought that he was not making idols the way his father used to do. आहुरी गोटे कथा मध्ये से भाबिथिले जे जो वे रे मो बापा मूर्ति गुडी को तयारी करथिले बधुए मु सेते सुंदर भाबरे मूर्ति गुडी को तयारी करि पारनी. Sulochana did not want to question him for his work. What is the reason behind this? And who is Sulochana? His wife. So गोविंद महाराणांकर वाइफ सुलोचना तांको तांको काम विषय रे किछि प्रश्न करिया पे चाहू नथिले. आ ता पछरे रीजन कोन थिला? Sulochana knew that her husband was one of the best image makers in the valley. सुलोचना जानि थिले जे तांका हस्बैंड से वैली रो से उपत्यकार सबुटु भलो इमेज मेकर से सबुटु बेस्ट मूर्ति तयारी करंती तांको वैली रो. So she did not question him for his work. तो तेणु से जानि थिले जे तांको काम रे से प्रवीण अटंती आ से पई तांको काम संबंध रे से किछि प्रश्न तांको पचरिया पई चाहू नथिले. What thought did come to Sulochana's mind when the trunk broke again on the third day? जेतबे तृतीय दिन मध्ये गणेश को सुनटी भांगी गला सुलोचना को माइंड को को कथाटी आसीतिला. सो सुलोचना भाबिले दैट जे हर हस्बैंड हैड बिकम ग्रीडी. ते तांको हस्बैंड टिके लोभी हे जंदी. ग्रीडी रो अर्थ होची लोभी एंड आस्क्ड फॉर मोर मनी फॉर द गणेश आइडल. सो जेति कि से पैसा मागु जंदी तांको लोभरे मागु जंदी से ओते लोभी हे जंदी आ गोटे गणेश को मूर्ति पई जेति कि पैसा चार्ज करबा कथा से ताटो अधिक पैसा मागु जंदी. Do you think Govinda Maharana had become old and his hands and eyes were not strong enough to prepare the day for the idol? Is there some supernatural power playing the trick? Let's read to find out. So the first paragraph रे दिया आइची तो सेठी क्वेश्चन करा होची जे तुमे कोन भाबुचो कि गोविंद महाराणांकर जे गोविंद महाराणा टिके बुढा हे जायतिले तांकर हाथ आउ आईसाइट टिके दुर्बल हो जायतिला. सेही पई से आइडल मेकिंग ठीक से करि पार नथिले एंड दैट इज द रीजन गणेश को सुनटी भांगी जाउतला. आउटे मध्ये क्वेश्चन पचरा आइची एटा कोनसी सुपरनैचुरल पावर बा अलौकिक शक्तिर काम थिला कि? No, I don't think Govinda Maharana had become old. ना मु भाबुनी जे गोविंद महाराणा बुढा हे जायतिले and his hands and eyes were not strong enough to prepare the day for the idol.
ଆଉ ମୁଁ एकथा मध्ये भाबुनी जे तांकर हाथ ଆଉ आईसाइट मध्ये दुर्बल होई गेला बा एते स्ट्रांग नथिला एते सबल नथिला जे गुटे मूर्ति तैयारी करि परिबे and I don't think there was some supernatural power playing the trick ଆଉ ମୁଁ एटा मध्ये भाबुनी जे सेठी कोनसी अलौकिक शक्ति थिला जे कि ए ट्रिक प्ले करथला ताले रीजन कोन थिला जो मैंने टेक्स्ट पढिथिबो जानिथिबो स्टोरी आगो कोन हेतिला सो एबे मैं सेकंड पैराग्राफ रो क्वेश्चन आंसर्स करिबा How old was Govinda Maharana? Govinda Maharana को बयस केते थिला? Who were there in his family? और तांको फैमिली रे के थिले? Govinda Maharana was 61 years old. He had a large family. So Govinda Maharana 61 वर्ष बयस तांको हितिला and तांको गोटे बड़ा फैमिली थिला of 8 members. और से फैमिली रे केते जन लोक थिले? 8 जन लोक थिले. He had a wife. तांको जन स्त्री थिले, 3 sons. तीनोटी पुआ थिले. Eldest son's wife and 2 children. ଆଉ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅର ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲା ଆଉ ଦୁଇଟା ପିଲା ମଧ୍ୟ ଥିଲେ. So in total there are 8 members in his family. Was Govinda happy with his eldest son? ଗୋବିନ୍ଦ ମହାରାଣା ତାଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଖୁସି ଥିଲେ କି ତାଙ୍କ କାମକୁ ନେଇକି ଖୁସି ଥିଲେ କି? How did he spend his day? ଆଉ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ ତା ସମୟ କେମିତି ଅତିବାହିତ କରୁଥିଲା? No, Govinda was not happy with his eldest son. ନା ଗୋବିନ୍ଦ ତା ବଡ଼ ପୁଅଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଖୁସି ନଥିଲେ. His eldest son spent his days by fishing idly in Mahanadi. ତାଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ ମହାନଦୀରେ ମାଛ ଧରିକି ସମୟ ଅତିବାହିତ କରୁଥିଲା. List the changes that had come in the designing of the day figures. Day figures ଏଠି କାହା କଥା କୁହାଉଛି? ମୂର୍ତ୍ତି କଥା କୁହାଉଛି. ମାଟିର ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପ୍ରଣାଳୀରେ କଣ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କୁହାଯାଇଛି. So there had been a subtle change in the designing of the clay figures. So बहुत सूक्ष्म चेंज आस्तिला बहुत अल्प चेंज आस्तिला मूर्ति डिजाइन क्ले फिगर्स माने से मूर्ति डिजाइन करिबारे बहुत सूक्ष्म चेंज हेतिला. It had eye catching new apparel and the shades of luminous paint. So new apparel माने नवा वस्त्र को किछि पिंधाइता जोडा कि eye catching हबो आखिर से हबो and the shades of luminous paint आ सेते विभिन्न प्रकार स्वच्छ रंग सब यूज करा जाउतिला. Who was Ranju? Ranju किए थिला? What was his contribution to Govinda's family? गोविंद महाराणा को फैमिली रे तार कंट्रीब्यूशन कौन थिला? सो रंजू वाज गोविंदा's youngest son. रंजू गोविंद महाराणा को सबटो सानो पुओ थिला. He followed his father's footsteps and took interest in his idol making. सेदा बापन को पथ को अनुकरण करथिला and तार इंटरेस्ट कोथे थिला आइडल मेकिंग रे. केवल रंजू ही तांकर एकमात्र पुओ थिला जे कि मूर्ति तैयारी रे टिके इंटरेस्ट देखौथिला. Where was the idol placed? मूर्ति की कोठी थिला? Why did Govinda keep the idol there? और गोविंद सेठारे मूर्तिटी को कौन पे रखिथिले? The idol was placed close to the open window. से मूर्तिटी खोले झरकार पाखरे थिला only a meter away. केवल गोटे मीटर दूर रे थिला. He kept the idol there. से सेठारे मूर्तिटी को रखिथिले काहे की? Because he thought that the idol was get more light. से कोन भाबिथिले जे एठी मूर्तिटा को रखिले मूर्तिटी को टिके बेसी लाइट मिलिबो and the wet clay would dry soon from the wind. ଆଉ ସେ जो ओदा क्लेटी अछि ओदा माटी अछि पवन रे झरकाडु जो पवन आसीबो सेथरे जल्दी सुखिबो. Why did Ranju request Govinda to close the window? रंजू गोविंद महाराणा को काहे की रिक्वेस्ट करथिला काहे की अनुरोध करथिला से झरकाटी को बंद कर देबा पाई. Ranju thought that it was because of the wind the trunk of the idol was breaking, so he requested to close the window. So Ranju कोन भाबिला जे ए जो पवन आसुची झरकाडु because of that the trunk of the idol was breaking. सेही पई से मूर्तिरो सुंढोटी भांगी जाउची and that was the reason he requested to close the window. आ सेटा ही रीजन थिला से गोविंद महाराणा को रिक्वेस्ट कला जे झरकाटी को बंद कर देबा पई. Did Govinda think that the wind was responsible for the breaking of the trunk? गोविंद महाराणा भाबुथिले कि जे झरकाडु पवन आसी सेही पई ही से मूर्तिरो सुंढोटी भांगुची? No, Govinda did not think ना गोविंद भाबु नथिले that the wind was responsible for breaking the trunk. गोविंद भाबु नथिले जे पवन पई ही गणेश को सुंदरटी भांगुची. Who could be the destroyer, the wind or the anger of God? तुमे कोन भाई की ध्वंस करितिबो पवन ना भगवान कर राग or the hands of the supernatural elements ना किछि अलौकिक शक्ति र हाथ या पछरे अछि. Section 3 will solve the mystery. Mystery अर्थ होछि रहस्य. So I think the destroyer of the idol was something else. मो भाबुची जे मूर्तिरो ध्वंस को आउ जने केही. एबे जीवा नेक्स्ट सेक्शन 3 को
Why did Govinda tell his son to sit in the workroom? गोविंद तांको पुओ को वर्करूम में बसिया पई काहे की कहिले? गोविंद wanted to know who the intruder was, so he told his son to sit in the workroom. So गोविंद जानिबा पई चाहुतले intruder रो अर्थ होची जे बिना परमिशन ने गोटे जगह को पसे, अनुप्रवेशकारी ताको ओडिया रे कहा जाय. सो गोविंद जानिबा को चाहुतले जे किए ताको बिना परमिशन ने ताको वर्करूम को पसुची आ सेई जिंसटा जानिबा पई से ताको पुओ को सेठी बसिया पई कहितले. Why did he choose that particular place to sit? आउ गोविंद महाराणा सेई पर्टिकुलर जगह को कोन पई बाछिथिले? He chose that particular place to sit because से सेही पर्टिकुलर जगह को बसिया पई बाछिथिले कारण from there they could observe the door. जो जगह रे समाने बसिया पई बाछिथिले सेई जगह रो समाने कबाट को लक्ष्य करि परिबे, the window झरका को लक्ष्य करि परिबे and the images at the same time. आउ से मूर्ति को मध्ये लक्ष्य करि परिबे. सो गोटे जगह रे एंती समाने बाछिथिले जो जगह रो समाने तीनोटी दिगो को समाने लक्ष्य करि परिबे. Was Ranju awake all through the night? Ranju राति सारा चाहिथिला कि? No, Ranju was not awake all through the night. ना रंजू राति सारा चाहि नथिला because he was a small child. से सोई जायतिला राति ताको निद लागितिला तो से सोई पड़तिला. He fell asleep. से सोई पड़तिला. What was Govinda thinking in darkness? अंधारे गोविंद कोन चिंता करथिले? गोविंद was thinking about who the intruder could be. So गोविंद ए जिंस विषय चिंता करथिले जे अनुप्रवेशकारी किए होइथिबो. He even thought that it could be an act of supernatural. आउ से एसबु कथा मध्ये चिंता करथिले जे ए जो अनुप्रवेशकारी गोटे सुपरनैचुरल पावर मध्ये हेथाई पारे, गोटे अलौकिक शक्ति मध्ये हेथाई पारे. Who was the intruder and how was it coming into the room? स्टोरी रो एंड रे आमे से इंट्रूडर विषय जानिथिलु से अनुप्रवेशकारी किए थिला आ से रूम भीतर को किपरि आसुथिला. द इंट्रूडर वाज अ कैट. से अनुप्रवेशकारी गोटे बिराडी थिला. ही वाज कमिंग इनटू द रूम फ्रॉम द वर्टिकल बार्स ऑफ द विंडो. विंडो रो जो वर्टिकल बार्स गुडी को थिला माने जो लोहा गुडी को थिला ए भलिया भाबे वर्टिकल बार्स मध्ये देकी से बिराडी जी रूम भीतर को आसुथिला. Why did Govinda Maharana smile at the end? शेषरे गोविंद महाराणा हसिले कोन पे? गोविंद had numerous thoughts about the intruder. So गोविंद को मन को भिन्न भिन्न थॉट्स सब आसुतला about the intruder. से अनुप्रवेशकारी विषय रे जे किए हेतिबो सुपरनैचुरल पावर न भगवान रागी के सब कहउचंती विभिन्न थॉट्स तंको माइंड को आसुतला. But when he saw that the intruder was a cat, कि जेतेबे से देखि पाले जे से intruder गोटे बिराडी होते, he smiled at the end. से शेषरे निज चिंताधारा ऊपर हसिथिले. So कुछ कंप्रेहेंशन अछि हम देखिबा. Answer the following questions in about 50 words. 50 वर्ड भितरे याको लेखिया पई दिया आइछि. Why was Govinda Maharana worried? What thought came to his mind? गोविंद महाराणा काहे की चिंतित थिले? तांको मन को कोन भावना बा विचार आसुथिला. Govinda Maharana was worried because the trunk of Ganesha idol he had made was broken. So गोविंद कोन पई चिंतित थिले? से बनौथुला गणेशଙ୍କ मूर्तिର ସୁଣ୍ଡଟି ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଥିଲା. His mind was full of thoughts. ଆଉ ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ବିଚାରରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା, especially of the superstitions. जो अंधविश्वासରେ ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା. He first thought that ସେ ପ୍ରଥମେ ଭାବିଥିଲେ he had no right to interfere in the private lives of the god. ସେ ପ୍ରଥମେ କଣ ଭାବିଲେ ଯେ ମୋର ଭଗବାନ ମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ. Then he thought that he was not as good as his father. तापर से कोन भाबिथिले जे तांको बापांको भया एते भलो आइडल मेकर नुहंती. Who made best idols? जे कि सबुटु बेस्ट मूर्ति तयारी करूथिले. He also thought से आहुरी मध्ये चिंता करथिले that gods were angry with him. जे भगवान माने तांको ऊपर रागी की अछंती and thus they punished him. आउ एई भया भाबरे से माने ताको दंड दउचंती. सब बहुत किछु कथा से चिंता करथिले. याको पुनी थरे त माने पढिबो. What was Sulochana's reaction to the breaking of the trunk? So से मूर्तिर सुंडटी भांगिबा को नै गोविंद को सुलोचनाଙ୍କର कोन प्रतिक्रिया थिला. सुलोचना was a good woman. सुलोचना जने भलो स्त्री लोग थिले and trusted her husband's hard work. औ तांको स्वामी को कठिन परिश्रम रे से विश्वास रखुथिले. When Govinda told her about his situation, जेतबे गोविंद तांको सिचुएशन तांको अवस्था विषय कहिथिले, too got worried. से मध्ये चिंतित होई पड़थिले. She thought that it was because of his age he was not able to make the idol the way he used to make it. So प्रथम सुलोचना कोन भाबिथिले it is happening because of his age. तांको बयस होई जायछि गोविंद महाराणांकर आ तांकर वृद्धावस्था जोगु से मूर्ति को ठीक से बनेबारे सक्षम हो नांती. She again thought that his eyesight was getting weak. तांकर दृष्टि शक्ति कमी कमी चलीछि सेही पई होय तो से मूर्ति ठीक से बनै पर नांती आ सेही पई मूर्तिर सुंदरटी भांगी जाउछि.
नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा why was she proud of her husband तांको स्वामी को लेके से कहीं गर्व अनुभव करथिले how did she value her husband's work सुलोचना was proud of her husband because she knew that he was one of the best idol makers in the town सुलोचना जानी थिले जे तांको टाउन रो तांको शहर रो सबटु भलो आइडल मेकर के सबटु भलो मूर्ति तयारी करे ना तांको हस्बैंड सेई कथा को लेके सुलोचना बहुत गर्व अनुभव करथिले she often heard people praising about her husband's आर्ट ऑफ आइडल मेकिंग से लोक मानक मध्य गोविंद महाराणकर प्रशंसा करथिवार सुनिचंती she knew that से जानिचंती जे he was one of the few best craftsmen left in the town से जानिचंती जे तांको टाउन रे आ अल्प केतेक बेस्ट क्राफ्ट्समैन बंजीचंती माने भलो मूर्ति तयारी करबा लोक आ बहुत कम बंजीचंती she kept her pride in secret आ से मने मने ए जिंस को भाबे कि बहुत गर्व अनुभव करथिले was गोविंद महाराणा सुपरस्टिशियस गोविंद महाराणा अंधविश्वास रे विश्वास करुथिले कि what proof do you get from the story आउ कोन प्रमाण पाउछ ई स्टोरी रे तमे माने जे गोविंद महाराणा जन अंधविश्वासी लोक थिले गोविंद महाराणा was superstitious से जन अंधविश्वासी थिले when the trunk of his idol broke जते बळे से तांको मूर्ति रो सुंडटी भांगी जाइतिला he had many thoughts in his mind तांको माइंड को बहुत विचार आसीतिला first प्रथमे से कोन भाबिले first he thought that he was doing wrong by interfering the private lives of the gods प्रथमे से भाबिले जे भगवान कर व्यक्तिगत जीवन रे से हस्तक्षेप करूचंती से भी भगवान माने तांको पे रागी चंती and then he thought तापरे से भाबिले that he was being punished by gods आ तांको भगवान माने दंड दउचंती तापरे से भाबितिले जे भगवान माने तांको दंड दउचंती even at the time of waiting so पिलामाने एटी टाइम ऑफ टिके ऐड कर दबो even at the time of waiting for the intruder he thinks about that it could be some supernatural power that he had been breaking the trunk of Ganesha जेतेबे से अंधार घरे से इंट्रूडर को अपेक्षा करिथिले जे केतेबेले के आसुची भांगुची एठी मु देखिबी सेही समय रे तांको मन को ए विचार मध्ये आसुतिला जे एहा कोनसी सुपरनैचुरल बा अलौकिक शक्ति जको घटुरित who helped Govinda in repairing the trunk गोविंद को से सुनहटी मरामती करिबारे के सहाय्य करथिला how did they differ in their point of view regarding the breaking of trunk आउ से दुई जनकर मत भितरे कोन डिफरेंस आसुतिला कोन प्रभेद आसुतिला रंजू गोविंद's youngest son helped in repairing the trunk गोविंदंकर सानो पुओ रंजू गोविंद को सहाय्य करथिला से ट्रंक को रिपेयर करिबारे he mended the broke trunk मेड माने मरामती करिबा से पुणी थरे से भंगा सुंभ को मरामती करथिला एंड मेड इट ब्यूटीफुल पुणी थरे ताको सुंदर भाबरे तयारी कर देथिला बोथ गोविंद एंड रंजू had different opinions regarding the breaking of the trunk regarding ର अर्थ होचे संबंध रे सो गोविंद और रंजू दुई जन करो से भांगुतबा सुंभ को नेकी विभिन्न मत थिला रंजू thought that it was because of the wind the trunk was breaking रंजू भाबुतिला जे पवन पई सुंभटी भागी जाउची on the other hand Govinda thought that it was not because of the wind but it was because of something else so Govinda कोन भाबुचंती जे यहा पवन पई भागुनी बरम अलग किछ रीजन देकी भागुची he did not agree with the son's view और से ताको पुअर विचार रे सहमत नथिले गोविंद महाराणा thought of many reasons for broken trunk गोविंद महाराणा बहुत किछि कारण भाबितिले से भंगा सुनंगु नेकी what are they और सेगुडी को कौन थिला firstly Govinda thought that his interference in the private life of the god is the reason behind the broken trunk प्रथमे गोविंद चिंता करथिले जे भगवान मानकर व्यक्तिगत जीवन रे हस्तक्षेप करथबा हेतु तांको मूर्ति रो सुनडी भांगुची then he thought that gods were punishing him तापरे से भाबिले जे भगवान माने ताको दंड दउचंती he also thought that there was some supernatural that was playing some trick with him तापरे से आहुरी गोटे कथा चिंता करथिले जे सेठी किछि अलौकिक शक्ति अछि जे कि तांको संगे किछि ट्रिक प्ले करछि he then blamed himself तापरे से निजो को दोषी मानिथिले for charging extra money for the idols because तांको लागुथिला जे से मूर्ति पई से अधिक पैसा चार्ज करछंती how did Govinda solve the mystery what did he find गोविंद से रहस्य को किपरि भाबे समाधान करथिले और लास्ट से कोन पाइथिले गोविंद was haunted with many thoughts गोविंद को माइंड रे बहुत किछि विचार थिला he thought of many reasons behind the breaking of the trunk
से सुंड भांगिबा पछरे बहुत कारण अछि बोली से भाबुतले. Then he decided to stay awake with his youngest son and see who the intruder was. तापर से डिसाइड करथिले जे राति सारा से चाय की बसिबे ताको सानो पुओ संगे आ देखिबे जे किए ए सुंडटी को भांगुची. He chose the place from where he could see the image of the intruder. से एपरी गुटे जगह एपरी गुटे स्थान बाछिथिले जोठी की रही की समाने से इंट्रूडर को देखि परिबे जे कबाट बडु की आछि बा झरका आडु की आछि आ से मूर्ति ऊपर मध्ये नजर रखि परिबे. बट टू बी सरप्राइज बट से गोटे जिंस देखि के आश्चर्य हो जाइथिले he saw that the intruder was a cat. सो एते विचार करी कि एते चिंता रे से थिले बट लास्ट को से कोन देखिले जैसे जो इंट्रूडर कथा से राते सारा चाहे कि भाबुथिले से गोटे बिराडी थिला. It was coming from the vertical bars of the window. So से झरकार vertical bars मध्ये देखि आसुथिला. Discuss how the superstitions created problem in Govinda Maharana's life. So story रो main theme कोन जे आमे अंधविश्वासी होबा उचित नुहे. आ एठी गोविंद महाराणा जी की बहुत मात्रा रे अंधविश्वासी थिले तांको जीवन रे किपरि समस्या आसीतिला. गोविंद महाराणा was one of the best image makers in his town. गोविंद महाराणा तांको शहरर सबुटु भलो इमेज मेकर थिले. People appreciate his art. आ लोक माने मध्ये तांको काम को पसंद करूथिले. गोविंद was hard working. गोविंद बहुत कठिन परिश्रमी थिले. But his superstitions created problem. किंतु तांकर अंधविश्वास तांको जीवन रे असुविधा आनि दैथिला. Once the trunk of his Ganesha idol was broken and his mind was full of thoughts. दिने कोन हैला तांकर से तयारी करथिला गणेशଙ୍କ मूर्तिର सुंडटी भागी जायथिला. माइंड विचार रे भरी जायथिला. He thought of many things which were specially based on superstitions. से किछि पॉजिटिव वे रे से कथा को चिंता करनथिले जे काहे कि सुंडटी भागुथिला. से अंधविश्वास रे जेते संभव अंधविश्वास कथा को चिंता करथिले जे कोन कोन जिंस पॉसिबल हे पारे. And because of that the trunk was breaking. He first thought that he was interfering in the private lives of the gods. से प्रथमे भाबिथिले जे से भगवान मानकर व्यक्तिगत जीवन रे हस्तक्षेप करजंती. Then he thought that gods were punishing him. तापर से भाबिथिले जे से भगवान माने ताको दंड दउजंती. His youngest son put forward his opinion that it could be the wind that broke the trunk. आउ ताको सानो पुओ गोटे विचार देथिला जे जो खोले झरका पाखरे से मूर्ति को रखा होची से खोले झरका रो आस्तिबा पवन पई से मूर्ति भागुची. बट गोविंद डिड नॉट एग्री विथ हिम. किंतु गोविंद ता संगे सहमत होई नथिले. He thought that there could be some supernatural powers that were playing tricks with him. से कोन भाबिथिले जे किछि सुपरनैचुरल पावर्स अछि किछि अलौकिक शक्ति अछि जे कि ताको संगे किछि ट्रिक प्ले करूची. His superstitious thought made him not see the practicality of the life. से प्रैक्टिकल हे की चिंता करनथिले. तांको माइंड रे सुपरस्टिशियस थॉट्स सब थिला. विश्वासी भलिया से चिंता करथिले. आस्तिकता भाबी हे की चिंता करनथिले. Even his life was disturbed by the unwanted thoughts of superstitions. और तांको जीवन मध्ये बहुत डिस्टर्ब हे जायतिला कहा द्वारा ए सब सुपरस्टिशियस थॉट्स द्वारा. The traditional art of idol making is drying. So मूर्ति तयारी रो कौलिक प्रथा कोन ताको सुखेइबा. Discuss in the class and note down the reasons for the near extinction of this art. आ तुम देखि परथबो धीरे धीरे ए मूर्ति तयारी आर्ट बा मूर्ति तयारी कलाटा विलुप्त होइका चलीछि. विषय गोटे नोट प्रिपेयर करिया पई दियाइछि. इंडीड रो अर्थ होछि वास्तविक. द ट्रेडिशनल आर्ट ऑफ idol making is drying. In reality प्रकृत रे the idol making is one of the fine arts that show the creativity of the makers. So idol making गोटे कला जोथरे कि लोक माने तांको क्रिएटिविटी को प्रदर्शन करथांती. सेमान निज कला को प्रदर्शन करथांती. There are many reasons why this art is at its near extinction. आउ एहर बहुत कारण अछि काहे कि एई सब कला गुडी को विलुप्त होई जाउछि. Craftsmen do not get enough money for their art. गोटे मूर्ति तयारी पई जेति कि समाने पैसा पाइबा कथा सेति पाउनांती. Most of the craftsmen tend to have a poor economic background and they need money. शिल्पी जो माने कि आइडल तयारी करंती समाने इकोनॉमिकली बहुत गरीब परिवार रो आस्थांती. मेकिंग आइडल्स इज द ओनली लाइवलीहुड दे हैव. एकमात्र रोजगार रो पंथा कोन मूर्ति तयारी करिबा. आल्सो नाउडेज पीपल आर टेकिंग लेस इंटरेस्ट इन टेकिंग आइडल्स. जेकि लोक माने मध्ये माटी मूर्ति किनिबा पई एते इच्छा प्रकाश करू ना.